Standard 6, Subject General Science, Lesson number 7, Nutrition and Diet. Nutrition in Marathi, पौष्टिक अन्न, and diet means आहार. So in Marathi, पौष्टिक अन्न आणि आहार. This lesson is completely related with our food stuff and types of nutrition and nutrients. Can you recall which are the various groups of foodstuffs? Name the ones you see in the pictures. Which main constituents of food do you get from them? See this picture. We can see fish, types of fruits, meat, eggs, milk, oil, and butter. Here, figure number 7.1 shows foodstuffs like different types of pulses and food grains. Second picture shows vegetables. So these are the different types of groups. Living things take food and water and use them for a variety of purposes, such as first one, obtaining energy. Second one, for growth of the body. Third one, to carry out day-to-day functions of the body. And fourth one, to fight against various types of diseases. Every living thing take food and water for all these type of activities. In living things, the process of taking in food and water and using it for growth and other purposes is called nutrition. Living thing, the process of taking in food and water and using it for growth and other purposes is called nutrition. जो भी लिविंग थिंग, जो भी खाना खाते हैं, मतलब कि जो इनटेक करते हैं फूड का और पानी का, किस लिए करते हैं? टू गेट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिक अन्न. And the constituents of food useful for these purposes are called nutrients. जो भी हम खाना खाते हैं, वैरायटी ऑफ जो हम फूड खाते हैं, लाइक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फिश है, मीट है, एग्स, मिल्क, ऑयल, घी, बटर एटसेट्रा, इन सब चीजों में अलग अलग टाइप के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, अन्न घटक होते हैं, जिसके कारण हमें पूरे बॉडी को नरिशमेंट मिलता है. So these all constituents are called nutrients. Let us study it in detail. Nutrients and foodstuffs. There are 6 main nutrients in our food. Remember, there are 6 main nutrients in our food. They are carbohydrates, fats, proteins, fiber, vitamins, and minerals. These nutrients are present in the different food items we eat in differing proportions. Let us learn more about some of them. जो हम खाना खाते हैं उनमें हर एक चीज में अलग अलग तरीके के फूड कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. उन सब कंस्टिट्यूएंट्स में से हमें हमारे बॉडी के लिए एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है और हम डे टू डे एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और सभी तरह के डिसीज को भी हम फाइट कर सकते हैं. Let us study all these nutrients one by one. First one, energy giving nutrients called carbohydrates. In Marathi, karbodaki. Our main need is of energy. Our body's main need is energy. It is fulfilled by carbohydrates. Hence, our diet includes a large proportion of cereals in the form of rice, chapati or roti, bhakri and bread, which contain carbohydrates. Cereals are our staple food. Staple means important, mukhya. So remember, our body need energy and we get energy from carbohydrates. In our daily diet, we eat chapati, roti, rice, bhakri. All these food items gives us energy.
in the form of carbohydrates. So in the picture, all different types of food grains or cereals are shown. Let us study second nutrients. Name is fats. In Marathi, charbi. Some part of our energy requirement is also fulfilled by fatty foods such as oil, ghee and butter. Oil, ghee and butter are called fats. We get energy in the form of heat from the food we eat. Heat is measured in kilocalories, like different measurements like sugar, other types of grains, we are measuring in kilogram. Milk, water, we are measuring in liters. Like our body energy is measured in kilocalories. So that's why when you buy any kind of food packets from the market, on the cover or the page of or the cartoon of that particular atom shows different types of kilocalories available from the food. Hence, the energy in food atom is also measured in kilocalories or calories. Children of growing age need to get approximately 2000 to 2500 calories from the food they eat. Figure 7.3 shows fatty foods like ghee, butter, or oil. Third nutrient name is proteins. We need proteins for the purposes of growth, repairing the wear and tear of the body, and for other life processes. We need proteins for purpose of growth. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हम प्रोटीन्स, हमारे शरीर में प्रोटीन्स की बहुत आवश्यकता है. वैसे ही जब हम कभी भी गिर जाते हैं, कभी भी हमारी स्किन कटती है, तो वो वापस उसको ठीक करने के लिए प्रोटीन्स हमें सहायता करता है. We get proteins from the sprouts, milk and milk products, meat and eggs in our food. हमें कहाँ से मिलता है? We get proteins from sprouts, then milk and milk products, types of different milk products, meat and eggs in our food. So figure number 7.4 shows the types of food which we get or provide us proteins. Next nutrition, that is minerals and vitamins. To improve the body's resistance to disease and for other life processes, the body needs vitamins, minerals and fiber in the diet. We obtain these nutrients mainly from vegetables and fruits. We obtain vitamins and mineral mainly from what? Vegetables and fruits. So that's why in our daily food diet, we eat different types of vegetables. That is the reason behind it. What is diet? The food which we eat in a day is called a diet. Remember it. We require vitamins and minerals in small quantities, but their deficiency can lead to various diseases. हमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारे शरीर में उसकी जरूरत होती है, लेकिन अगर उतना भी हमें हमारे बॉडी में ना वो अगर जाता नहीं है, फूड के हिसाब से इनटेक नहीं होता है, तो उसके कारण बहुत सारे डिफिशियंसीज होते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस हो सकते हैं. Let us learn more about them. The body needs several inorganic substances. They are called minerals. The body needs several inorganic substances. They are called minerals. Minerals in Marathi it is called khanije. The table below gives example of some minerals and provides information about their functions in the body. The various sources of the minerals as well as diseases caused by their deficiency. So let us study this table. The table, 4 columns are given. First one minerals, second one their functions, their sources and deficiency diseases. Let us study it in detail.
First mineral called iron. The function of iron is carrying oxygen to all parts of the body. The function of iron in our body is to what? To carry oxygen to all parts of the body. Where we get iron? From which food we get iron? We get it from meat, spinach, apples, raisins, etc. स्पिनच मतलब पालक, raisins means मनुके. So deficiency of disease is anemia. What is anemia? Ashaktapana. So if our body cannot get the food sources like meat, spinach, apples, raisins, so there is a chances of anemia. Second one, calcium and phosphorus. फंक्शन इज स्ट्रेथन द बोन्स एंड टीथ. ये हमारे बोन्स को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं और हमारे टीथ को भी ये स्ट्रॉन्ग करते हैं. सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी गेट इट? फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मीट. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से हमें सब कैल्शियम फॉस्फोरस मिलता है. वैसे ही हमें मिलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मीट में से. अगर हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है तो हमें कौन सा डिसीज हो सकता है? लाइक बैड टीथ, ब्रेटल एंड वीक बोन्स. बैड टीथ, हमारे टीथ खराब हो सकते हैं. ब्रेटल मतलब टिसूड, वीक एंड वीक बोन्स, हमारे जो बोन्स है, हड्डियां है, वो भी बहुत वीक हो सकती है. सो टू ओवरकम फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिसीज इन अवर डेली फूड there is a need of milk and milk products. इसलिए सभी बच्चों को बोला जाता है कि उन्होंने मिल्क पीना ही है. ओके, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट. नेक्स्ट वन, आयोडीन कंट्रोल्स ग्रोथ, speeds up chemical reactions in the body. Sources, resins, manuke, beans, fish and seafood. The deficiency of disease is goiter. Goiter is the disease related with our throat, that is कंठस्थ ग्रंथि. इसलिए हमारे डाइट में हमें आयोडीन कौन से चीज में से मिलता है? आयोडीन नमक, आपने सुना है, जो हम नमक यूज करते हैं सॉल्ट, उसमें भी आयोडीन होता है. इसलिए हम हमारे सब्जियों में थोड़ा सा नमक डालते हैं. ज्यादा नमक हमारे शरीर के लिए हानिकारक है. नेक्स्ट वन, सोडियम एंड पोटेशियम maintains the body's water balance and functioning of the muscles and the nervous system. Where we get from it? Salt, cheese, leafy vegetables, fruits, pulses. इन सभी चीजों में से हमें सोडियम एंड पोटेशियम मिलता है. अगर सोडियम और पोटेशियम की हमारे शरीर में कमी होती है, सो देयर इज अ डिसीज लाइक इनएफिशिएंसी ऑफ मसल्स. हमारे मसल्स उतने मजबूत नहीं होते. तो इन सारी चीजों के लिए हमारे बॉडी में मिनरल्स की जो आवश्यकता है वो बहुत जरूरी है. In next lecture we will learn vitamins. Thank you.